लहरों का थमना नहीं होती समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी से भीतर तूफान अभी बाकी। नमस्कार, मैं जखना जोशी, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, श्री हसमुख भाई पटेल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री कमल कुमार सर, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर एनएसएस, श्री आरजे माची, स्टेट एनएसएस ऑफिसर, Dr. Naveen Sheth, Vice Chancellor of Gujarat Technological University, Dr. K.N. Khair, Registrar of Gujarat Technological University और उपस्थित सभी युवाओं का जीटीयू परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। A very warm welcome to wonderful, beautiful and auspicious day that brings too many special people together like you. जैसे कि हमारे देश की परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के नाम के साथ की जाती है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी मंचस्थ अतिथिगण से कि वे इस खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ाएं। आई चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। Lamp lightning is supposed to bring a lot of positivity in the atmosphere where it is lit. सभी से अनुरोध है कि वे एनएसएस लक्ष्य गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, हम लड़े तो सब लड़ेंगे अपने आप साथियों। ज़मीं पे आसमान को उतार दे, ज़मीं पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को काटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। और नारियां रहे सदा, हरे भरे वनों की शान ओढ़ती रहे हरा। तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे।
शून्य राह की बढ़ाए वेग प्रेम की अखंडता की चाह की सद्भावना से ये चमन निखार दे सद्भावना से ये चमन निखार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे समाज के लिए उठे उठे जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे 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 जीटी एंथम हम कंटिन्यू करेंगे जीटी एंथम के साथ। समुचित ज्ञान समन्वय समुचित ज्ञान समन्वय जन कल्याण का अड़िग हिमालय गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय समुचित ज्ञान समन्वय समुचित ज्ञान समन्वय इनोवेशन की मशाल उठाए ज्ञान को चारों ओर फैलाए विश्वकर्मा की कृपा को पाकर विश्व फलक पर शान बढ़ाए नवीनता की खुशबू से जो भारत का कण कण महकाए ज्ञान पिपासु शिष्य वृंद की तपो साधना सफल बनाए समुचित ज्ञान समन्वय समुचित ज्ञान समन्वय अनुभवी शिक्षक कौशल बढ़ाए परहित का ही पाठ पढ़ाए अनुसंधान और ज्ञान का संगम भावी पीढ़ी उज्जवल बनाए आत्मनिर्भर युवा बने और शिक्षित विकसित राष्ट्र कहाए गौरव माता पिता का बढ़ाए हर मन में विश्वास जगाए समुचित ज्ञान समन्वय समुचित ज्ञान समन्वय विकास का यही क्रम दोहराए जीटीयू को सर्वश्रेष्ठ बनाए हासिल करके उच्च सफलता शिक्षा जगत में क्रांति लाए सिद्धपुर सोमनाथ सूरत से कच्छ तलक फैला ज्ञानालय अपार संजोए संभावना गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय समुचित ज्ञान समन्वय समुचित ज्ञान समन्वय जन कल्याण का अड़िग हिमालय गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय समुचित ज्ञान समन्वय समुचित ज्ञान समन्वय स्थान ग्रहण करें।
स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए we would like to welcome our esteemed guests by presenting them with token of respect and love. I request Dr. Naveen Sheth to welcome Shri Hashmut Bhai Patel. I request Dr. Naveen Sheth to welcome Shri Hashmut Bhai Patel. NSS claps goes to I request Dr. K.N. Khair sir to welcome Honorable Kamal Kumar sir. NSS claps goes to I request Dr. Alpesh Tafla to welcome Shri R.J. Machi. NSS claps goes to I request Professor Ghanshyam Shah to welcome Dr. Naveen Sheth. NSS claps goes to I request Professor Ghanshyam Shah to give welcome address. Hello. Honorable Dr. Naveen Sheth, Vice Chancellor, Gujarat Technological University. Today's chief guest, Honorable Shri Hasmukh Patel, Member of Parliament, Ahmedabad East. Guest of honor, Dr. Kamal Kumar Kar, Assistant Program Advisor, NSS Delhi. Our distinguished guest, Shri R.J. Machi, State NSS Officer. Dr. K.N. Khair, Registrar GTU, Dr. A.H. Dafra, Program Coordinator, NSS GTU, GTU staff member, NSS volunteers, and all my dear friends. Today, on behalf of NSS GTU, I welcome you all to the NSS GTU Award Function Ceremony for the year 2017-18 and 2018-19. Gujarat Technological University is running NSS unit in different affiliated colleges for last many years. GTU is having more than 10,000 volunteers and hundreds of program officers all over the Gujarat. Some of the major NSS GTU achievements include the construction of more than 9,000 toilets in different villages of Gujarat, distribution of more than 10,000 cloth bags to make the dream of plastic-free nation a reality, and more than hundreds of adopted villages working for the target of 100% Aadhaar card, voter ID card, and other government scheme cards. NSS GTU is also organizing different awareness programs in cities and villages for the fulfillment of developed nation. Every year, NSS GTU unit collect more than 5,000 units of blood and plant more than 10,000 trees. I once again welcome all the dignitaries and congratulate to all the volunteers and program officers who are going to receive award today. Thank you. Thank you, sir. GTU is online or doing live on Facebook and Insta page. So who are not present here can join there.
And as per chronology, do like and share. कार्य की सफलता के पीछे छुपी होती है कार्य करने की प्रेरणा, और या फिर ऐसा कहे एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन। हमारी खुशनसीबी है कि आज एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय श्री कमल कुमार सर को कि वे हमेशा की तरह हमें प्रेरित करें, हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए। नमस्कार। जीटीयू एनएसएस के पुरस्कार समारोह में उपस्थित माननीय सांसद श्री हसमुख पटेल साहब, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री नवीन भाई, रजिस्ट्रार खेर साहब, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर दाफरा जी, एनएसएस की जहां पर रियल काम होता है, गांव है, गांव से आए हुए सरपंच श्रियों, फैकल्टी मेंबर्स, मीडिया पर्सनल और एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रिय मित्रों, बहुत खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में मैं शामिल हो रहा हूं। कल तक कुछ और हिसाब से, आज कुछ और हिसाब से। कल तक मैं गुजरात के इंचार्ज के हिसाब से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा था, आज एनएसएस मुख्यालय की प्रतिनिधि के हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जो कि दिल्ली से। तो मैं माननीय कुलपति श्री और माननीय कुल सचिव श्री का आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर रहने की मौका दिया कि जिस काम को हमने शुरू किया था 2012-13 में, वो आज कहाँ तक पहुंची उसको देखने की सौभाग्य मिला। जहां तक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, हमने एक शुरू किया था कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग जो पढ़ता है स्टूडेंट, उसमें सरकार की तरफ से कितना खर्चा होता है। प्राइवेट कॉलेज की बात में नहीं कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। या प्राइवेट कॉलेज में भी एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर को तैयार करने के लिए सरकार की अथाह पैसा खर्च होता है, और ये जो पैसा है समाज से ही आता है, हमारे टैक्स के हिसाब से, हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो समाज ने जो पैसा जो इनके ऊपर रिसोर्स लगाया है, हमने कभी पलट के समाज ने इनसे मांगा नहीं है, लेकिन हमारे विद्यार्थी जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके मन में एक होना चाहिए कि एक मौका मिला है समाज को कुछ बदले में देने का, तो समथिंग गिव इन रिटर्न। हमें कोई गिफ्ट देता है तो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, कोई हमको कोई व्यवहार किया तो हम बाकी व्यवहार की जो बात है हम लौटा देते हैं। तो जो शिक्षा में यहाँ पे हमको मिल रहा है, हम कैसे समाज को लौटाएंगे, ये एक मौका एनएसएस देता है। इस मौके को फायदा उठाना है, इस मौके को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके हम समाज के लिए कुछ करें, यही ध्येय रखते हुए एनएसएस 2012 से कुछ कॉन्क्रीट कदम जीटीयू में लिया हुआ है। 2 दिन पहले हमारे विभाग की सचिव मैडम उषा शर्मा, सीनियर आईएएस एंड सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स, उन्होंने एक मीटिंग लिया था। पूरे भारत से गिने हुए 11 कार्यक्रम अधिकारी आए हुए थे, जिसमें जीटीयू से डॉक्टर सांघवी भी थे, जहां पर ये जो शौचालय की बात उन्होंने किया, जंकना ने 6000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने 9000 शौचालय बनाया 7 दिन के अंदर 147 गांव में, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में सराहा। तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन है। हर एक गांव की जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, एनएसएस वॉलंटियर्स एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, जो डीपीआर जिसको कहते हैं सरकारी भाषा में। एक डीपीआर बनाने में सरकार को 60-70 हजार रुपए खर्च होता है, इसलिए सरकार डीपीआर हर जगह के बनाने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि बजटरी कंस्ट्रेंट होती है। तो यहाँ पे बात आती है कि जो एनएसएस विद्यार्थी है, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग काम करते हैं, जो डीपीआर बनाए और ये डीपीआर सरकार को सबमिट करते हैं। तो सरकार की जो कार्यक्रम होती है क्रियान्वयन करने के लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये डीपीआर बनाना, गांव में ड्यूरेबल एसेट्स बनाना, मैकेनिकल कंप्यूटर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उन्होंने गांव की स्कूल की इलेक्ट्रिफिकेशन कराना, वहां पे कंप्यूटर की एएमसी कराना, मेंटेनेंस कराना। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसको अपने हाथ में लिया हुआ है, जिसके लिए जीटीयू बाकी यूनिवर्सिटी से अलग खड़ा हुआ। तो आपको ताज्जुब होगा कि जब जो
टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जीसी गोधरा हो, जीसी पाटन, आई कैन टेक एनी नेम्स, क्योंकि मैं अभी 6 महीने पहले तो गुजरात छोड़ा है, ज्यादा दिन तो हुए नहीं। तो ये बच्चे कहीं भी जाते हैं, आप ताज्जुब करेंगे, गांव के अंदर नंगे पैर जो अपने घर पे पानी की गिलास नहीं उठाते हैं, वहां पे अपने खाना खुद बनाते हैं, चाहे वो कैसे भी टेस्ट हो खुद खाते हैं, और गांव वाले ताज्जुब करते हैं कि ये जो कल की कलेक्टर बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, ये बच्चे हमारे बीच में आए। तो इनको देख के गांव की जो लड़का है, गांव में जो स्कूल में पढ़ता है बच्चा, उसके मन में और एक आता है कि चलो मैं इनकी जैसा बनूं। तो ये प्रेरणा स्रोत बनता है जीटीयू की वॉलंटियर। तो ये जो विद्यार्थी है, 11,000 विद्यार्थी, मैं इन सबको बधाई देता हूं। और मुंह पे तारीफ करने की बात नहीं है, जब से नवीन भाई यहाँ का कुलपति बने हुए हैं, एनएसएस के लिए सतत उनके द्वार हमेशा खुला रहता है। आउट ऑफ वे जाके एनएसएस के लिए बात करते हैं, काम करते हैं। तो जब लीडर इस हिसाब से चलता है, मुझे कहने में दो राय नहीं है कि जीटीयू की जो वॉलंटियर्स हैं, ये लोग आगे आने वाले दिनों में और अपने झंडा ऊपर उठाएंगे और समाज में अपना पहचान छोड़ेंगे। उन्हें जितने विद्यार्थी मित्रों को यहाँ पे अवार्ड दी जा रही है, उनको मैं सब बधाई देता हूँ, सारे कार्यक्रम अधिकारियों को बधाई देता हूँ। जिनको नहीं मिला है उनको दोबारा बधाई देता हूँ, क्योंकि आपके लिए और चांसेस है। और यहाँ पे मैं एक आधिकारिक सब बोल सकता हूँ कि ये पहला ऐसा अवार्ड सेरेमनी है जहां पे दत्ता गांव की सरपंच श्रियों को बुलाया के उनके हम सुनने जा रहे हैं। दिस इज वेरी यूनिक इन द कंट्री एंड आई विल शेयर इट एट द नेशनल लेवल। पुनः माननीय सांसद श्री का मैं आभारी हूं कि आप यहाँ पे खुद ही देखेंगे और बताएंगे आप ऊपर जाके कि किस तरह से विद्यार्थी, और ये पे मैं एक और चीज ऑन द रिकॉर्ड बता दूं, पूरे विश्व में सबसे कम धन एनएसएस के ऊपर खर्च होता है। 1 घंटे के लिए 1 रुपए 13 पैसे ही खर्च होता है हमारा। कोई इसको विश्वास नहीं करेगा। जब यहाँ पे एक पिज्जा का कॉस्ट 250 रुपए है, साल भर में एक विद्यार्थी को 160 रुपए मिलता है कार्यक्रम के लिए। कोई विश्वास नहीं करेगा इस पर को। क्यों विश्वास नहीं करेगा? क्योंकि जिस जोश, जिस लगन, जिस हर्ष के साथ, जिस लगाव के साथ हमारे विद्यार्थी, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर काम करते हैं, इससे लगता नहीं कि 160 वाला प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैं ये कहने में दो राय नहीं है कि हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। पैसा कभी हमारा बाधक नहीं बना है। हम मन में विश्वास लेके चल रहे हैं कि समाज के लिए करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है कि युवा देश की भविष्य है, राष्ट्र निर्माण में आप योगदान करेंगे, एनएसएस सही मायने में उसी रास्ते पे चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में चलेगा। आप सभी इसकी साक्षी बनेंगे और जो विद्यार्थी पास आउट होकर जहां जहां भी पहुंचेंगे वहां भी एनएसएस के लिए अपना योगदान देते रहेंगे, यही कामना करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री आर.जे. माची टू शेयर हिज वर्ड्स। સૌને નમસ્કાર મિત્રો। આજના પાવન પ્રસંગ રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના જીટીયુ એનએસએસ એવોર્ડ વિતરણ કાર્યક્રમના આજના આપણા માનવંતા મહેમાન આદરણીય લોકસભાના સભ્ય શ્રી હસમુખ પટેલ સાહેબ, વીસી ઓફ યુનિવર્સિટી નવીનભાઈ, નવી દિલ્હીથી આપણને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પ્રોગ્રામ એડવાઇઝર આદરણીય ડોક્ટર કમલ કુમારજી, રજિસ્ટ્રાર ખેર સાહેબ, જીટીયુના રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાના પ્રોગ્રામ કોર્ડિનેટર શ્રી એચ દાફડાજી, પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રીઓ, સરપંચ શ્રીઓ અને જેના માટે આપણે આજે સૌ ઉપસ્થિત થયા છીએ વોલેન્ટિયર મિત્રો। કમલ કુમાર સાહેબ સરસ વાત આપણને કરી છે મિત્રો। ગુજરાતમાં એમનું શ્રેષ્ઠ યોગદાન રહ્યું છે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના કાર્યક્રમ માટે। આજે હું એક તમને ચિતાર આપું, 38 જેટલી યુનિવર્સિટી આપણી સાથે જોડાયેલી છે અને 1,87,000 વોલેન્ટિયર્સ સમગ્ર રાજ્યમાં અહીં પ્રવૃત્તિ નેશનલ સર્વિસ સ્કીમ ઇઝ અ સ્કીમ ફોર નેશન બિલ્ડિંગ। મિત્રો, આખી આ પ્રવૃત્તિ જ રાષ્ટ્ર ઘડતર માટેની છે। દેશના જે યુવાનો છે, જે યુવાધન છે,
એ સાચી દિશામાં જાય, સાચા માર્ગે જાય, એમનું વ્યક્તિત્વ ઘડતર થાય, ચારિત્ર નિર્માણ થાય, આવી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ એમાં એ સહભાગી બને, ગ્રામ્ય પ્રદેશને જાણે. ઘણા બધા એના કોમ્પોનન્ટ્સ છે, એમાં ડિટેલમાં કઈ આજે જવાની જરૂરિયાત નથી, પણ એ બધી પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાને રાખી અને આ આખી સ્કીમ આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ. મને એ કહેતા આનંદ થાય કે 38 જે યુનિવર્સિટીઓ અમારી પાસે છે રાજ્ય કક્ષાએ, એ પૈકી જે શ્રેષ્ઠ કાર્યો થઈ રહ્યા છે એ પૈકીની આ જીટીયુ આખી ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી છે. અને એમાં ઘણી સારી પ્રવૃત્તિઓ આપ સૌના સહયોગથી થઈ રહી છે, એનો અમને વિશેષ આનંદ છે મિત્રો. અને એ પણ વાત મારે આજે આપ સૌ સાથે શેર કરવી છે કે ગામના પ્રથમ નાગરિક એવા સરપંચશ્રી જ્યારે આવીને આપણી યોજનાની વાત કરતા હોય તો ઇટ્સ અ વન કાઇન્ડ ઓફ સોશિયલ ઓડિટ. ત્યાં આપણું કામ પૂર્ણ થાય છે મિત્રો. સોશિયલ ઓડિટ થઈ ગયું કે ગામના પ્રથમ નાગરિક આપણી સમક્ષ આપણી વચ્ચે આવીને રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાની વાત કરતા હોય, આપણા વોલેન્ટિયરોની વાત કરતા હોય, આપણી યુનિવર્સિટીની વાત કરતા હોય, તો ઇટ્સ અ વન કાઇન્ડ ઓફ સોશિયલ ઓડિટ. તો એ આપણું કામ મિત્રો સરસ છે, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આજના આ પાવન પ્રસંગે મારે ડિટેલ વાત નથી કરવી, ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ અહીંયા મૂકેલા છે, પણ હું આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. અને હંમેશા આ જીટીયુ દ્વારા આવી પ્રવૃત્તિઓનું વાવેતર થતું રહે ફિલ્ડમાં, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં એના અંકુરિત અને વટવૃક્ષ સમાન આપણા કાર્યો ફૂલે ફાલે. સૌને મારા વતીથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવી વિરમું છું. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू सर. हमारे एनएसएस के स्वयंसेवक जो दत्तक लिए हुए गांव में जाकर जो भी प्रवृत्ति करते हैं, उसमें एक मेहनत के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है वहाँ के सरपंच श्री का सहकार, जो हमें बहुत अच्छे से मिला है. तो आज वक्त है उनके इस सहकार को सम्मानित करने का. I would like to request dignitaries on the stage to felicitate those sarpanch who are present with us. I would like to request Naveen Sheth sir to felicitate Patel Harshad Rai, Sarpanch Shri from Bhatgam. I request Dr. Kate Khair sir to felicitate Patel Alpesh Bhai, Sarpanch Shri Koteshwar. I request Dr. Alpesh Napra to felicitate Patel Umesh Bhai, Sarpanch Shri Purva Taluka Panchayat, Gandhinagar. I request Professor Ghanshyam Shah to felicitate Thakur Manek ji, Sarpanch Shri Amyapur Gaon. आइए अब सरपंच श्री से ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है हमारे एनएसएस की प्रवृत्ति के बारे में. मैं अनुरोध करना चाहूंगी पटेल हर्षद भाई जी की वे अपने विचार व्यक्त करें.
આજના જીટીયુના એનએસએસ પુરસ્કારના આ કાર્યક્રમમાં પ્રથમ તો અમને આમંત્રણ આપવા માટે હું જીટીયુ અને એનએસએસના પ્રોગ્રામના આયોજકોનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વધુમાં અત્રે ઉપસ્થિત આપણા સંસદ સભ્ય શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ તથા અન્ય સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત મહેમાનોનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે વધુમાં તો જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે એનએસએસ ના કાર્યકર્તાઓ દરેક ગામડે ગામડે જઈ ગામડાના દરેક ઘરોને ત્યાં જઈ ઘરોમાં કેટલા વ્યક્તિ રહે છે એમને સરકાર તરફથી જે કાર્યક્રમો જે યોજનાઓ લાગુ કરવામાં આવી છે એમને લાભ મળ્યો છે કે કેમ એ લોકો તપાસ કરે છે. જે યોજનાનો લાભ જો એમને નથી મળ્યો હોતો અને જે યોજનામાં લાભ મેળવવાને પાત્ર હોય એમને ગાઈડ કરે છે. તેમના નામોની સૂચિ બનાવી સરકારશ્રી સાથે સંપર્ક કરીને એમને જે તે યોજનાઓનો લાભ અપાવે છે. મોટા ભાગે મા કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ જેવા જરૂરી જે કાર્ડો છે એ કાર્ડોની કામગીરી ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક અને સારી રીતે પૂર્ણ કરેલ છે. અમારા ગામો તથા अन्य સરપંચશ્રી જે ઉપસ્થિત છે એ દરેક ગામડામાં 95 થી 99% કામગીરી આ મા કાર્ડ, આધાર કાર્ડની પૂર્ણ કરેલ છે. તો આ સારામાં સારી કામગીરી માટે હું હૃદયપૂર્વક એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને એમને ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને આગળ સાહેબશ્રીઓએ જે વર્ણન કર્યું તેમ એનએસએસ ના કાર્યકરોની જે કામગીરી જોઈ અમારા ગામના બાળકોને પણ એમાંથી પ્રેરણા મળે છે અને એમના પણ મનમાં થાય છે કે નહીં અમારે પણ જીવનમાં આ યુવાઓની જેમ અમારે કંઈક આગળ વધવું જોઈએ. ને વધુમાં અમારા ગામ ખાતે હમણાં જેમ વાત થઈ એમ વૃક્ષારોપણ, સ્વચ્છતા અભિયાન અને શિક્ષણ જાગૃતિ એવા અન્ય ઘણા કાર્યક્રમો કરીને એનએસએસ ના કાર્યકર્તાએ ખૂબ સારી કામગીરી બજાવેલ છે. તો હૃદયપૂર્વક હું તેમનો ફરી વખત આભાર માનું છું. जय हिंद, जय भारत. आभार सर. हमेशा मेहनत के साथ जरूरत होती है एक दिशा की, जिस दिशा पे हम चल सके, और वो दिशा देने के लिए होते हैं हमारे साथ वॉलंटियर्स के साथ हमारे प्रोग्राम ऑफिसर. तो आइए उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Professor Shreyansh Divakar to share his views. Jai Hind. Good morning to Honorable Member of Parliament Shri Hashmukh Patel sir, Vice Chancellor of JTU Naveen Seth sir, Machi sir, NSS Advisor Kamal Kumar sir, GTU Coordinator Alpesh Dapda sir, all the program officers from different colleges, and my all dear NSS volunteers. NSS, as it suggests, it's not me but you. Working for the society, contribution, what you can do for the society. That is a very important thing that NSS teaches us. NSS includes different activities that we have been doing, whether it is NSS special camp, whether it is national integration camp, whether it is tree plantation, blood donation. All such activities, they are creating awareness. They are creating awareness among the people. We are creating awareness among the society that what we can do for the society. If we are donating the blood, then we are saving millions of people, lives of millions of people. So all such activities, they are very, very important because it sensitizes the youth. It connects the youth and the society. So NSS plays a very important role. And I can say in myself that in my routine work, the way of dedication and the punctuality and discipline that I have acquired is only because of NSS. I am feeling very proud and honored to say that NSS is doing an extraordinary thing. The way it does different activities, that is very, very important. And apart from that, GTU is also taking many initiatives so as to update the technology, whether it is GTU NSS portal that is being created by Alpesh Dapda sir. That is an extraordinary thing that you can directly upload the file. Plus, additionally to that, PFMS, Public Financial Management System, we have been undergoing 3 training of PFMS. Although it is an account related work, trying to we are being updated by the technology and the knowledge. So NSS plays a very important role in upgrading the technology and different activities. So I would like to lastly congratulate all the program officers from different colleges and the NSS volunteers for their valuable contribution. Thank you.
थैंक यू सर। वो रास्ता पे क्या जो कहीं एक छोर पर खत्म हो जाए, और वो सफर ही क्या जो कुछ नया ना सिखाए। There is beauty in every journey, and the journey of life teaches lesson of life. Now, I would like to invite Ms. Saloni Parekh to share her NSS journey with us. आदरणीय स्टेज पे उपस्थित महानुभाव, to all the dignitaries on and off the dais, a very good morning. A very good morning from someone who had never imagined to step into a village, to walk on the roads of India, and to work for the development of India. Today, I would like to thank NSS and especially GTU here for giving me the opportunity to me so that I can share what my journey is in NSS and how, as a person, NSS evolves us. इस चीज की शुरुआत होती है स्पेशल कैंप से। वो 7 दिन, वो नए लोगों से मिलना, गांव की संस्कृति समझना, वो संस्कृति समझ के जानना कि रियल इंडिया क्या है। When we are living in the urban society, when we are living in cities, हम रियल इंडिया से बहुत दूर होते हैं। When we see the village, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, हमारे भारत की संस्कृति क्या है। At that point of time, I have personally realized that we experience what our real India is. Today, I want to share one experience of my life that is all I have, that is all what I have received just because of NSS, which I never imagined. Currently, I am working in a village, Rajpur, which is in Patan district, where I am working upon for skill development of 30 children who are 10th standard pass out. I have realized because of NSS that each and every individual mind, हर एक इंसान के पास वो skills होती है through which they can be a very strong source to become a part of development of India. The problem or the obstacles they face is just a proper guidance. Every one of us sitting here is very lucky that we have amazing guidance with us, either as a form of our program officers, as Kamal Kumar sir who has guided us, and each and everyone who is present here, जिन्होंने किसी ना किसी तरह से हमारा motivation बढ़ाया है, हमें influence किया है. But when, as our respected Sarpanch sir said, कि the people in the villages have skills, but उन्हें पता नहीं है कि उनके पास opportunities कौन सी है और जो है तो उन्हें grab कैसी करनी है. So now when we people are lucky, we have got the opportunity कि हमें एक level मिला है. I believe, I urge and I would request you all कि हम किसी ना किसी तरीके से वो part बने उनके लिए कि we do something in which we are skilled to give them that priority, that influence and that motivation कि वो लोग अपने skills और अपने talents को पहचाने and they can bring out the best from them. With this, I would like to end congratulating each and every volunteer and program officer who are getting awards today. And more than that, I would like to congratulate each unit because one volunteer would get the award today, but each and every one of us knows that those 50 and 100 volunteers who are working with them are responsible for that one leader to stand here and speak and take the award. थैंक यू। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय कुलपति श्री डॉक्टर नवीन शेठ से कि वो आकर अपने शब्द हमें बताएं। नमस्कार। मंचस्थ आज के मुख्य मेहमान हमारे सांसद श्री अशोक भाई पटेल, इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से खास पधारे एनएसएस के डायरेक्टर कमल कुमार जी, हमारे रजिस्ट्रार खैर सर, गुजरात एनएसएस के ऑफिसर माछी सर,
हमारे जीटीयू के एनएसएस ऑफिसर दाफड़ा सर, मंच के सामने विराजमान सभी महानुभाव, सरपंच श्री और हमारे वॉलेंटियर्स भाई बहन, आप सबका जीटीयू की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पहले सब बताया कि एनएसएस की क्या कामगिरी होती है, क्या करते हैं हमारे वॉलेंटियर्स। तो जब मैंने देखा, जब चार्ज लिया वाइस चांसलर का, फिर जब अलग अलग सेक्शन का अभ्यास किया, तो मालूम हुआ कि हमको 11,000 वॉलेंटियर्स अलॉट किए गए हैं गुजरात की ओर से, गुजरात एनएसएस की ओर से। लेकिन जो वॉलेंटियर्स की संख्या है वो 7,000 है। दैट मीन्स वी आर लाइक बिहाइंड 4,000। तो मैंने उसके लिए क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें होने चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति में वो शुरू से मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि केवल उनके पास डिग्री होगी उससे नहीं चलेगा। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, समाज के प्रति संवेदना होनी चाहिए। तो ये ऐसे रूटीन क्लासरूम टीचिंग से नहीं होता है, वो मैं स्पष्ट मानता हूं। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये एनएसएस, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब आर्ट्स कॉमर्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ऐसा कई लोगों की मान्यता है। वो गलत मान्यता है। और हमारे विद्यार्थियों ने प्रूव भी किया है कि आइदर एनएससीसी, आइदर एनएसएस, और इट इज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ए कल्चर एक्टिविटी, वो सब पे अच्छा अपना मेरिट्स बताते हैं, कहीं नेशनल लेवल पर जाते हैं। तो ऐसे हमने देखा है। तो ये जब चैलेंज मेरे सामने थी, 4,000 विद्यार्थी अब कम थे, तो हमने पूरा एफर्ट्स लगाया, पूरा एक गाइडेंस के लिए एक शिविर रखी हमने, मार्गदर्शन के लिए पूरे गुजरात के सभी प्रोग्राम ऑफिसरों के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान पर उसको गाइडेंस दिया, मोटिवेट किया, और इन दैट वी अचीव आवर टारगेट। 10,700 volunteers are registered with the GTU, which is the highest in number in as far as the all university is concerned. फिर ऐसे कोई रूटीन कामगिरी करनी, फोटोग्राफ लगा देना और ये करना, ऐसा नहीं। टेक्निकल स्टूडेंट्स है तो कुछ अपने जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल स्किल है, तो उनका फायदा हमारे जो गांव के पीपल है, क्योंकि गवर्नमेंट कितने फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू करती है। अभी डिजिटल इंडिया, रुपे कार्ड, भीम एप्लीकेशंस, ये कितने सब ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए, लेकिन कभी कभी वो नीचे तक परकोलेट नहीं होता है। तो केवल सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं चलेगा। हम भी समाज के एक जागरूक घटक है, हमारे पास टेक्निकल स्किल है, तो एनएसएस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो एनएसएस के प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चे जाते हैं। विश्वकर्मा योजना गुजरात गवर्नमेंट ने हमको दिया है, तो उनके हिसाब से भी गांव में जाते हैं। तो डिजिटल इंडिया के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किया हमारे वॉलंटियर्स ने। भीम एप्लीकेशंस, अभी इतना सिंपल एप्लीकेशन है, बाकी सब में क्या है, पैसा ट्रांसफर करना है तो कोई फॉरेन का कोई जो बॉडी है, पेटीएम है, एटीएम है, और वो जिसमें चार्ज लगता है, उसी प्रकार से ट्रांजैक्शंस होता है। भीम एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है, केवल जो अकाउंट नंबर के साथ अपना जो फोन नंबर दिया है वही नंबर जो होगा, तो इजीली 10 रुपया भी कोई ट्रांसफर कर सकता है, कोई 100 रुपया भी, छोटी रकम भी कर सकता है। लेकिन इसका ये सब फायदा, इसकी जानकारी ये नहीं होती है कभी कभी। तो हमारे बच्चे ये सब भी काम करते हैं कि भीम एप्लीकेशन का यूज कैसे करना, इसका फायदा क्या है। तो बहुत जो टेक्निकली कुछ करना चाहिए उसी प्रकार से एनएसएस यूनिट काम करती है।
हमारे जीटीयू के ऑफिसर दापड़ा सर भी पूरे एफर्ट्स लगाया है। और इससे भी अच्छा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका हमारा उल्लेख किया, तो और भी ऐसा हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए ये आज का जो प्रोग्राम है वो भी हमको जरूर मोटिवेट करेगा, एक नया गाइडेंस भी हमको मिलेगा। और आपका जो सुझाव है वो भी हमारी ओर आएगा, तो और भी हम क्या नए नए आयाम कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद सर। Member of Parliament hold huge influence both in our local area and the formation of national society. I would like to call the Honorable Chief Guest, Mr. Hashmukh Bhai Patel, to share word of wisdom to us. NSS class goes to आप सबने नमस्कार। एनएसएस जीटीयू એવોર્ડ ફંક્શનમાં આપણે ઉપસ્થિત એમના માટે હમણાં કહેવાય કે આઉટ ઓફ વે જઈને પણ આ પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે એવા જીટીયુના વાઇસ ચેરમેન આદરણીય પ્રોફેસર ડોક્ટર નવીનભાઈ શેઠ, આસિસ્ટન્ટ પ્રોગ્રામ એડવાઇઝર नेशनल दिल्ली थी जे काम करी रहा છે એવા ડોક્ટર કમલ કુમાર, સ્ટેટ એનએસએસ ઓફિસર મિસ્ટર આરજે માચી, પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેટર ડોક્ટર એચ દાફડા, ડોક્ટર કેએન ખેર, ચાર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી આવેલા આદિને સરપંચશ્રીઓ, આ વિસ્તારમાં રહીને સમાજ સેવાનું અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે અમારા સાથીઓ, પ્રોગ્રામ ઓફિસર્સ અને દેશનું ભવિષ્ય એવા એનએસએસ વોલેન્ટિયર્સ, મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, યુવાનો આવનારા દિવસોનું દેશનું ભવિષ્ય છે અને આ યુવાનોમાં સમાજ સેવા થકી વ્યક્તિત્વ ઘડતર અને સાથે સાથે રાષ્ટ્ર નિર્માણ કેવી રીતે થાય એવા ઉમદા ઉદ્દેશ સાથે ગાંધીજીના જન્મ શતાબ્દી વર્ષ 1978 માં નેશનલ સર્વિસ સ્કીમની શરૂઆત કરવામાં આવી। આ યોજના અંતર્ગત યુવાનો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જાય, સમાજની સાથે હળી મળીને સમાજના પ્રશ્નો સમજે, સમાજ સાથે તાકાતનો અનુભવે, ગ્રામ સફાઈ હોય, એ લોકોની જરૂરિયાતો હોય એને પૂરી પાડે અને સમાજને સમજે, કેમ્પમાં રહીને સાથે રહેવાનો અનુભવ કેળવે, એકાત્મતા કેળવે, આનાથી જ રાષ્ટ્રનું ઘડતર થતું। મિસ્ટર માચીએ બહુ સારી વાત કરી કે ધીસ ઇઝ ધ નેશન બિલ્ડર પ્રોગ્રામ, રાષ્ટ્ર નિર્માણ। દેશ અને રાષ્ટ્ર વચ્ચે તફાવત શું છે? કોઈ પણ દેશની રચના કરવી હોય તો ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે। એક જમીનનો ટુકડો હોય, એમાં રહેનારા લોકો હોય અને એક શાસન વ્યવસ્થા હોય। દેશ નિર્માણ નહીં થાય, રાષ્ટ્ર નિર્માણ થાય। રાષ્ટ્ર નિર્માણ ત્યારે જ બને જ્યારે એ દેશમાં રહેનારા લોકોમાં એક ભાવનાત્મક એકાત્મતા, રાષ્ટ્રીય એકતા। આપણે સાંભળ્યું છે દેશ દાજ સાંભળ્યું છે, રાષ્ટ્રધ્વજ સાંભળ્યું છે, રાષ્ટ્ર પ્રેમ। દેશના નાગરિકોમાં જ્યારે એકાત્મતા, નેશનલ ઇન્ટિગ્રિટી ડેવલપ થાય ત્યારે સાથ અથવા રાષ્ટ્ર નિર્માણ। માનું છું કે આ યોજનાના માધ્યમથી યુવાનો જ્યારે પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ, પ્રાંતથી ઉપર ઉઠીને સમાજ સેવાનો સંદેશો લઈને જતા હશે ને એમાંથી એમનું જે વ્યક્તિત્વ ઘટક થતું હશે એનાથી આ દેશને એક સારા નાગરિકો મળશે અને નાગરિકો થકી આ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થશે। આપણા દેશનું પ્રતિજ્ઞાપત્ર પણ છે, ભારત મારો દેશ છે અને બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે। આ ભાવ પેદા થાય તો આપણું રાષ્ટ્ર મહાન બને અને
એટલા માટે જ આપણે દેશને માના સ્વરૂપે જોઈએ છીએ. મા ભારત આપણા સૌની માતા એક મા ભારતી અને એના આપણે સંતાનો. મને આનંદ એ વાતનો થયો કે આપણા વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર નવીનભાઈ આ પ્રવૃત્તિને ખૂબ આગળ વધે. એમને મને આપેલી માહિતી પ્રમાણે 457 કોલેજીસ આ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી. એમાંથી 150 કરતા પણ વધુ કોલેજ આજે એનએસએસ પ્રવૃત્તિમાં સક્રિય છે. અને આપણા માધ્યમથી સમાજની સેવા તો થાય છે, આપણા દેશની ફ્લેગશિપ યોજનાઓની જાણકારી મળે છે, આપણા ટેકનિકલ નોલેજનો લાભ મળે છે. એથી વધારે અગત્યની વાત છે આપણું જે ઘડતર થઈ રહ્યું છે આ પ્રવૃત્તિથી એ આવનારા દિવસોમાં દેશ માટે ઉપયોગી. આ એવોર્ડ જે પણ વોલન્ટિયર્સ એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરવાના છે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને કમલકરજીએ મને વાત કરી કે વક્તવ્યમાં પણ કહ્યું કે ખૂબ નાની રકમ આ યોજના માટે ફાળવવામાં આવે છે. 2 તારીખથી લોકસભા શરૂ થવાની છે. ઇન્ડિયન મિનિસ્ટ્રી ફોર યુથ અફેર્સ એન્ડ સ્પોર્ટ્સ મિસ્ટર કિરણ રિજિજુજીને રૂબરૂ પણ મળી છે અને આ વિષયને અનુભવો શેર કરીને આ યોજના વધુ સારી રીતે ચાલે રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં આપણે સૌ સહભાગી બનીએ દિશામાં મારો પ્રયત્ન કરીશ. આપ સૌને પુનઃ એકવાર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર. જય હિન્દ, જય જય ગરીબ. थैंक यू सर. डर हमें भी लगा फासला देखकर, पर हम बढ़ते गए रास्ता देखकर. खुद ब खुद मंजिल आ गई हमारे करीब, हमारा यह बुलंद हौसला देखकर. अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. I request dignitaries on the stage, Shri Hashmukh Bhai Patel, Shri Kamal Kumar Sir, Shri R.J. Machi, and Dr. Naveen Sheth to give away the awards to our awardees. Start with Best NSS Volunteer of GTU, Girls 2017-18. Patel Vandana, Government Engineering College, Patan. Patel Priyansh, LD Engineering College, Ahmedabad. Patel Disha, Babaria Institute of Pharmacy, Vadodara. NSS claps goes to Ruchika Kaneria, Sarvajanik College of Engineering and Technology, Surat. NSS claps goes to Best NSS Student Volunteer 2018-19 Girls, Patel Mansi, Anand Pharmacy College, Anand.
Tariq Saloon, Vishwakarma Government Engineering College, Ahmedabad. NSS clap goes to Ishwar Hemakshi, LD Engineering College, Ahmedabad. NSS clap goes to Tohri Nidhi, Government Engineering College, Godhra. Tohri Nidhi, Government Engineering College, Godhra. NSS clap goes to Maharana Simran, Babaria Institute of Pharmacy, Vadodara. Maharana Simran, Babaria Institute of Pharmacy, Vadodara. NSS clap goes to Best NSS Volunteer 2017-18 Boys. Prajapati Tejas, Government Engineering College, Gandhinagar. NSS clap goes to Malvania Urvis, Vishwakarma Government Engineering College, Ahmedabad. NSS clap goes to Next is Bedut Parikshit Kumar, LD Engineering College, Ahmedabad. NSS clap goes to Next is Kusham Mistri, Sarvajanik College of Engineering and Technology, Surat. Kusham Mistri, Sarvajanik College of Engineering and Technology. NSS clap goes to Next is Panchal Jay, Government Engineering College, Godhra. NSS clap goes to Best NSS Student Volunteer 2018-19 Boys. Rao Hemant, Anand Pharmacy College, Anand. Rao Hemant, Anand Pharmacy College, Anand. Next is Makrana Ravi, Vishwakarma Government Engineering College, Ahmedabad. NSS clap goes to Next is Solanki Chirag, Government Engineering College, Patan. Next is Udit
ऐश्वर्या यश बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय वीवी नगर। NSS flags goes to Next is Rathwa Pushpa Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Technology SVIT Basel. NSS flag goes to Best Program Officer 2017-18 Professor Parmar Narendra Singh Government Engineering College Godhra. NSS flag goes to Next is Professor Charmin A. Jarsania, Marwadi Educational Foundation Group of Institution, Rajkot. Professor Dhanal Daria, Vishwakarma Government Engineering College, Ahmedabad. NSS flag goes to Professor Dharma Kumar Patel, Government Engineering College, Patan. Best Program Officer 2019. Professor Makwana Manisha, A.D. Patel Institute of Technology, VV Nagar. NSS flag goes to Professor Mayur Sevak, BBM Engineering College, VV Nagar. NSS flag goes to Professor Divakar Shreyans, Anand Parvati College, Anand. Dr. Gopal Bhatt, Babaria Institute of Technology, Baroda. NSS flag goes to Professor Bharat Vaidya, Sardar Patel College of Engineering, Bakrol. NSS flag goes to Best NSS Unit 2017-18, Government Engineering College, Palanpur. NSS flag goes to
Marwadi Education Foundation Group of Institute, Rajkot. NSS flag goes to Marwadi Education Foundation Group of Institute, Rajkot. Best NSS Unit 2018-19. E.D. Patel Institute of Technology, BB Nagar. NSS flag goes to E.D. Patel Institute of Technology, BB Nagar. Government Engineering College, Godhra. NSS flag goes to Government Engineering College, Godhra. Next is Birla Vishwakarma Mahavidyalay, BB Nagar. Birla Vishwakarma Mahavidyalay, BB Nagar. NSS flag goes to Next is Anand Pharmacy College, Anand. NSS flag goes to Anand Pharmacy College, Anand. Thank you so much, all dignitaries. I request you to take your seats. Thank you so much again. Now, I will hand over the mic to Dr. Alpesh Thapra to present the vote of thanks. Namaskar to one and all present here. Many congratulations to all the winners. NSS GTU is setting new milestones every year, whether it may be construction of more than 9,000 toilets under Swachh Bharat mission or distribution of thousands of cloth bags under Plastic Free Nation initiative. Our NSS volunteers have enormous potential strength for social services, which once showed during their period of volunteership gives golden dreams to our great country throughout their life. I am very much thankful to our chief guest, Honorable Shri Hashmukh Patel sir, Member of Parliament, Ahmedabad East, for sparing his valuable time and remaining present for this award function ceremony and motivating us. Thank you very much, sir. I am heartily thankful to our guest of honor, Dr. Kamal Kumar Kar sir, Assistant Program Advisor, NSS New Delhi. Respected Kamal sir has always been a guiding torch for NSS Gujarat. I am thankful to Shri R.J. Machi sir, State NSS Officer, for blessing us with his presence. I am thankful to Presidency of this function, Honorable Professor Dr. Naveen Sheth sir, Vice Chancellor GTU, for this program. I am immensely thankful to our respected Dr. K.N. Kher sir, Registrar GTU, for this function. I am also thankful to Mithilaben Patel, NSS Section GTU,
Dr. Akash Govil, Sports Section, GTU, Professor Ghanshyam Shah of NSS VGC, all the section heads of GTU for their support for this ceremony. I am also very much thankful to all the Sarpanchri who are present here, all the principals of different colleges, all the program officers of different colleges, and all the volunteers of different colleges for remaining present here. Lastly, I am thankful to my NSS volunteers for this wonderful decoration which you can see on the sides, for the management and the hard work for making this program a great success. Again, thanks to all. Jai Hind. Thank you, sir. Now I would like to request all to stand up for national anthem. We conclude the ceremony here. Lunch is arranged for 1 hour from the here, beside the hall.